हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। आप सबको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, अगर मेरी आवाज़ ऑडिबल है तो एक बार जरूर कंफर्म करना। आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। ओके, आई थिंक मेरी आवाज़ आ रही है। अगर मेरी आवाज़ अब जैसा कि मुझे लग रहा है कि अब ऑडिबल है, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले यहाँ पर इसीलिए कंफर्मेशन ज़रूरी होता है आवाज़ का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चों, हो जाता है कि जब हमारी क्लास भी हो जाती है और हमें बाद में पता चलता है कि आवाज़ नहीं है। आपका गोल अन अकेडमी के कंटेम्प्रेरी गोल बना करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लैट 20% का ऑफ लेने का आपके पास विकल्प है, बहुत सुनहरा ऑप्शन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कूपन कोड RAT10 लगाकर डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अचीवर्स बैच आ रहा है, जिसको आप ज्वाइन करके अपना 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का टारगेट अपने हिसाब से देखो, अपने बजट के हिसाब से देखो, और बजट को सही बनाने के लिए डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले सकते हो। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, टारगेट करेंगे कि रीअरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो हमने करे थे शुरू, उनको हम पूरा कर सके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन से रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं जिनको हम टारगेट करने वाले हैं। एक बार फटाफट उन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और देखते हैं। एक तो क्वेश्चन आपका ये वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें पहले एरर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, ये वाला 7 वाला, इसमें एरर देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग कर लेंगे अपने आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 1 2 3 4 5, चलो स्टार्ट करो। एक बार रीड करो, इसमें एरर डिटेक्ट करनी है। अगर आपको लगता है कोई सेंटेंस में एरर है तो फटाफट बताओ क्या एरर हो सकती है। ट्राई, कम ऑन। आंसर लगाने से पहले कंफर्म जरूर करना। देखो, इस क्वेश्चन में बात चल रही है, द नागालैंड असेंबली हैड पास्ड rejecting the contentious citizenship bill. Gauri was shot dead in broad daylight in front of a Bengaluru residence. Buffers on the fire destroyed nearly 50 acres in Bokapuram, Singara. It is appearing the two countries are plotting against the regional superpower. अब बात आती है क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट है ना, क्या कर सकते हैं। देखो, आपको पता है अपीयर को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करना, तो हमें कहना पड़ेगा इट अपीयर्स। ऑप्शन नंबर 4 में एरर बता सकते हो। अपीयरिंग की जगह लिख सकते थे इट अपीयर्स दैट टू कंट्रीज आर प्लॉटिंग अगेंस्ट द रीजनल पावर। Option number 4 is right. Next is the armed men looted 2.5 lakh from the petrol pump in the Gomati district. A predicted 70% decline in the summer rain by 2050 would devastate Indian agriculture. The police held a foreign national after he breached the high security gates of Israeli embassy.
ये वाला ट्राई करो, इसमें एरर फाइंड करने की कोशिश करो। पहले रीअरेंज वाले क्वेश्चन करेंगे, पहले एरर वाला ट्राई करते हैं। क्या लगता है क्वेश्चन में कहाँ पर गलती हो सकती है या है? इस क्वेश्चन में आपको मैं सजेस्ट करूंगा, he was much more surprised than I. Comparison of subject with subject. Subject with subject. Comparison of subject with subject की कंडीशन है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर। The country has over 120 million hectares suffering from some form of degradation. He is almost quite competent to deal with the situation. Teams were expected to be disruptive in their outlook and challenge the status quo. Security forces continue to patrol sensitive areas which are potential troublemakers. Yes, yes, we can try this now. अब देखो इस क्वेश्चन में भी मैं ये कह रहा था आपसे, द कंट्री हैज ओवर 120 मिलियन हेक्टेयर सफरिंग फ्रॉम सम फॉर्म ऑफ डिग्रेडेशन इज ऑलमोस्ट क्वाइट। तो कितने बच्चों को पता है ऑलमोस्ट और क्वाइट का मीनिंग सेम है?
कैसे? ऑलमोस्ट का मतलब भी कंप्लीटली होता है और क्वाइट का मतलब भी कंप्लीटली। तो दोनों शब्द अगर कंप्लीटली सेंस दे रहे हैं तो फिर एक साथ यूज क्यों? एक यूज करो, ऑप्शन नंबर 2 आंसर लगाओ। क्या कहते हो? सही बात है। गुड आफ्टरनून गायत्री, हाउ आर यू? ये वाला ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स ट्राई दिस। आई एम फाइन। There is a question where we have to find error. Police verified his credentials before initiating any legal action. The two missiles were tested for different altitudes and conditions. The survey shows that 85% of Indian corporate houses are hiring gig workers. The company's last mile delivery model was born out of efforts of the four-member cross-functional team. What would be the change that we need to require to make over here? Third, हाँ, ये तो सही है, दिस इज करेक्ट। इसका आंसर नन ऑफ दीज आ सकता है। What answer we can go with in this question is like option number 3, option number 4, 5, none of these. ये वाला ट्राई करते हैं। दिस इज एरर। पहले काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, सीक्वेंस का क्वेश्चन कर लेते हैं। देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सीक्वेंस। Did we do these questions? Gayatri, did we do this question? Just we did this, na? Okay, so we are going to try this one. This one. EQRS. Okay, let's do this. Yes.
ये तो इम्पोर्टेंट है क्या सर? नहीं, इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। Gayatri wants to go with C. Uh, an environment includes all these natural resources which surrounds us to help in number of ways. It gives us all things which we need to live our life on this planet. It provides us better medium to grow and develop. However, our environment also needs some help from all of us to get maintained as usual to nourish our lives and forever to never ruin our lives. SRQP. Perfect answer. You got the perfect answer. C is the right answer. Next question. Please try. Please try this one. नीतू, जो सीक्वेंस बताया था वो आपको सुनना है, ठीक है? जैसे अभी मान लो ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो ध्यान से देखना सीक्वेंस और उसके बाद आंसर करना। हाँ, थोड़ा सा और ध्यान से देखना पड़ेगा वहां पर है या नहीं। बी। जी, यहाँ लगता है कि बल्ले का लगा है किनारा। इसको समझते हैं पहले कौन सा ऑप्शन बनेगा। इसमें लिखा है द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ अ माइनॉरिटी विद इन और आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म अ ग्रैंड यूनिफाइंग। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट नेवरदलेस। अच्छा, अब इसमें दो बार स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात चल रही है, पहले ध्यान से देखो। कह रहा है द स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी एक्सपीरियंस ऑफ माइनॉरिटी विद इन द सोसाइटी जनरली और इवन द एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप। एक ये कह रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि ये बात पक्की है, या तो पी से शुरू होगा या तो आर से शुरू होगा। ये बात पक्की है। दिस इज श्योर। ये तो सुनना आप, है ना? अगर आपको पिछले क्वेश्चन में नहीं आया था समझ में, तो इस बार सुनना आप, शायद आपको समझ में आए कि करते कैसे। इसको बोलते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस का मतलब होता है इसमें हमें सीक्वेंस बनाना होता है, सही सीक्वेंस। अब जैसे क्यू है, इससे तो शुरू नहीं हो रहा, एस से भी शुरू नहीं हो रहा, नेवरदलेस से लिखा है वो भी नहीं होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि पी से शुरू करें सर या आर से शुरू करें, ठीक है? आर कह रहा है द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म कैन बी वेरी डिफरेंट एंड द different forms of socialism. Socialism never has a monopoly on social criticism. ये बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है
ए वाला जो पी वाला स्टेटमेंट है, कह रहा स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस, अब 2 बार स्टार्टिंग पॉइंट of a minority within society generally, or even the experience of a group or person within the progressive social movement which does not live up to the progressive agenda in every space. अब ये दो बातें, एक तो पी आर करके बनाना पड़ेगा और एक आर पी करके बनाना पड़ेगा। पी आर करके बनेगा या आर पी करके बनेगा, दो तरह से बनेगा। अब ये चीज यहाँ से डिसाइड हो जानी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों में अलग अलग आंसर आएंगे, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि सर ए ऑप्शन में क्यू एस यहाँ पर भी दिया है, क्यू एस यहाँ पर भी दिया है, तो नीचे के दोनों तो गलत हैं। The starting points of social criticism can be very different, and different forms of socialism never has a monopoly on social criticism. The starting point can be the experience of a minority. Very nice, गायत्री। अब ये पता चल गया कि सर जो आर वाला स्टेटमेंट है वो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि वो बता रहा है इनिशियल स्टार्टिंग, कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ सोशल सोशल क्रिटिसिज्म। अब ये जो कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी द एक्सपीरियंस ऑफ अ मिनॉरिटी, ये सोशल क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है। पहले किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, ऊपर बाद में सोशल मूवमेंट विच डज नॉट लिव अप टू द प्रोग्रेसिव एजेंडा। इसका मतलब है कि आर स्टेटमेंट यदि पहले बोला जाए, इफ आर स्टेटमेंट इज यूज्ड फर्स्ट, देन आर आंसर कैन बी मोर रिलेटेबल। हम उस आंसर को कहेंगे कि रिलेटेबल आंसर। क्या कहते हो? ये चीज समझ आई? अब इफ आई से आर पी, देन आई हैव टू से क्यू एस। कैसे? Within or after postmodernism, a grand unifying theory of no longer seems possible. This does not include exclusive possibility of necessity or dialogue. Last, में nevertheless, most social critics still consider the critique of capitalism to be central. This can be the answer. Answer option number B. Okay. अब आया समझ में? Okay, Gayatri wants to go with D option. Fine. इसमें ये कह सकते हैं कि
QSRP. Comfort is now one of the causes of its own spread. It has now become a physical habit, a fashion, an ideal to be pursued for its own sake. The more comfort is brought into the world, the more it is likely to be valued. Those who have known comfort, discomfort. Well done. Gayatri, well done today. Here, you have answered all almost the questions of rearrangement correct. Absolutely correct. Me too. Are you there? Trying questions? Try. Try this one. गायत्री ने डी लगाया ओके वेल डन गायत्री लेट्स सी व्हाट इज द आंसर इट सेज as courage is required. I think you should say courage is required to explore our secret life because we must first withdraw from the social mirror where we are fed positive and negative feedback continuously. Because Gayatri, the S statement talks about as we get used to this social feedback. How initially we can say that as we get used to this social feedback, have we talked about this statement earlier or have we introduced any sort of social feedback or something like that? So better we say Q in the initial statement. That is, we can start our question, our statement with Q. So better we start with the statement number Q, which says second option, courage is required to explore our secret life because we must first withdraw from the social mirror where we are fed positive or negative feedback. Now, after saying this, you can say, probably you can say, as we get used to this social feedback, it becomes a comfort.
and we may opt to avoid self-examination and idle away our time in vacuum of reverie and realization. After that, in that frame of mind, we have little sense of identity, safety, or security. The last statement. So this way, you would have said the option number A is right. Better answer to go with is option A, isn't it? Now we can try next question. Try this. Okay, Gayatri, do you want to go with the option number 4? Fine, we can try. It talks about any leader asked to address the plenary session of World Economic Forum at Davos as an opportunity to do with two things. The first is to pitch his or her country strongly to foreign companies and investors. The second is to build the brand of both the individual. Acha. One thing is pretty sure, Gayatri, over here, that you have to talk about Q and R. Q and R. Isn't it? Q and R. The moment we say Q and R, Gayatri, we are left with the option number 4. No, P, Q, and R. Any leader asked to address the plenary session of the World Economic Forum at Davos has an opportunity to do with two things. First is to pitch his or her country strongly to foreign companies and investors. Second is to build a brand of both the individual and the country by looking at issues and concerns beyond those that just concern his or her own country. So the world, after all, is soaring, lacking in the statesman and stateswoman of global stature. Very nice. Option number D is perfectly fine. You can go with the fourth option. Your answer is right. Perfect answer, Gayatri. Now we shall try this question.
Second option. The aim must be to ensure that our country does not experience either a paucity or a surfeit of trained manpower in a specific segment of our economy. When we set about the task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of the goals of education in the specific context of our nation's development. Now, one of the important aims of education would be to create the required range and nature of trained manpower assessed to be needed by the different sectors of national. The entire educational apparatus must be geared progressively to fulfill the requirements of the different phases of growth in every sector, primary, secondary and tertiary. सही बात है, इसको हम कह सकते हैं कि the entire educational apparatus must be geared progressively to fulfill the requirements of different phases of our growth in every sector, primarily, secondary, and tertiary. It should be like Q. When we set about that higher task of higher education, we should be absolutely clear in our perception of goals of education in the specific context of our national development. Q. Then, no doubt, one of the important aims of education would be to create the required range and nature of trained manpower assessed to be needed by the different sectors of national growth. And then the entire educational apparatus must be geared progressively to fulfill the requirements of different. And then the aim must be to ensure that our country does not experience either the paucity or a surfeit of trained manpower in a specific. सही बात है. Very nice. Second option is perfect. Very brilliantly answered. Right, three. Well done. We shall try the same question. Okay. So today we have this much questions only, but don't worry. In the most probably next session, we'll have more such questions or more, variety जहाँ पर हम ज़्यादा questions try करेंगे. और अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कूपन कोड RAT10 लगाकर डिस्काउंट ले सकें, और अचीवर्स बैक भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, जो भी आपका बजट है, कैन प्लान योर। तो हम मिलेंगे ज़रूर नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे और फर्दर क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए रीअरेंजमेंट से रिलेटेड और एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।